12 enfants. Le père regarde ses enfants avec plein d'amour, qui écoutent la musique du murli et qui dansent et qui se balancent dans la balançoire au-delà des sens, maintenant devenue la forme du murli et du murlidar. Avez-vous célébré Diwali? L'âge de confluence. Les trésors des pensées, du temps et de la connaissance. Raconter la connaissance et l'écouter, c'est le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est de raconter et l'écouter. Mais Gyan veut dire connaissance. Que dites-vous sur la connaissance? Que la connaissance est lumière et pouvoir, donc light and might. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Donc, Gyan ou la connaissance signifie que lorsque vous avez la lumière et le pouvoir dans vos pensées, vos paroles et vos actions, vous êtes qualifié. Donc, vous avez cette qualité, vous êtes qualifié de knowledgeful, empli de connaissances. Om Shanti.
Averti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour. परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। Om Shanti, bienvenue à chacun à Averti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 30. Avoir un intellect aimant afin de devenir un joyau victorieux. Le sujet aujourd'hui, ayez toujours de l'espoir, soyez toujours victorieux. Et le signal aviaque, quand vous avez la nature ou l'essence car de quelqu'un, n'ayez pas la pensée, je ne sais pas si celui-ci changera ou pas. Transformez le découragement en espoir, mais pour toujours. Quand votre foi est inébranlable, votre victoire est constante. Quand dans votre foi vous posez la question de pourquoi ou quoi, alors il manque quelque chose en votre victoire. Autrement dit, dans vos acquisitions. Par conséquent, ayez toujours de l'espoir, soyez toujours victorieux et rendez aussi les autres victorieux. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. कहते हैं उम्मीद को आशा Dans le monde, les gens disent तो उम्मीद है que lorsque vous avez de l'espoir, हमेशा कहते हैं आशा का cela veut dire que la lumière ou la lampe est allumée. तो आशा का दीपक बुझना नहीं चाहिए Ils appellent cela la lampe de l'espoir. Donc, cette lampe ne devrait jamais s'éteindre. Parce que si elle s'éteint, vous ne pouvez plus rien voir. S'il y a des tempêtes qui vont venir de toute façon, il y a une chanson aussi en hindi qui dit « Lorsqu'il y a des tempêtes, c'est OK, mais notre lampe ne devrait pas s'éteindre, elle devrait toujours être allumée. Pour cela, gardez toujours l'huile des pensées dans cette lampe, qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la lumière. Ce qui arrive, si nous sommes les uns, si nous coopérons les uns avec les autres et que nous nous encourageons, nous allons vraiment ressentir que nous sommes de toute façon tous ensemble dans notre voyage. Alors nous allons penser, oui, nous allons atteindre cela. Très vite, nous voyageons ensemble, que ce soit les obstacles du corps ou des sens-cars, mais ils devraient toujours avoir ce sentiment qu'ils peuvent atteindre la montagne facilement. Quelques-uns sont capables, d'autres ont besoin de soutien. Nous devrions avoir de l'espoir pour tout le monde, que tout le monde puisse atteindre leur destination et se transformer quelquefois. Ils sont découragés, ils disent « Ah, ces choses me viennent vers moi, j'ai tellement de choses, je dois régler tous mes comptes. » Donc, pensez que tout le monde, que Baba est là, Baba nous écoute. Si Baba nous tient la main, alors pourquoi seriez-vous découragé? Si vous êtes découragé, alors vous ne serez pas capable d'expérimenter l'aide de Baba, le pouvoir de Baba. Alors, tout va être bon, tout est bon et bien. Et donc, nos pensées sont la fondation. Nos pensées devraient toujours être puissantes. C'est mon droit de naissance d'être victorieux. Baba dit, vous êtes des joyaux victorieux. Donc, cette pensée devrait toujours être là. Donc, vous avez toujours de l'espoir. Vous avez toujours le pouvoir et vous devriez être capable d'accumuler le pouvoir et recevoir du pouvoir. Pour cela, nous devons porter beaucoup d'attention. Ne soyez pas découragés.
आशा Ayez बनी toujours रहे। ce zèle et जैसे cet कहते हैं enthousiasme. कभी कोई Soyez स्वभाव toujours, संस्कार को देख के, ayez toujours de l'espoir lorsque vous voyez quelqu'un ou क्योंकि la उस nature आत्मा de के द्वारा quelqu'un, वो बात आती रहेगी, parce परिस्थिति que आती ce रहेगी। sont leurs sanskars. C'est que quelque chose vient पर ऐसे टाइम d'eux, पर मनसा qu'il y a des सेवा चाहिए। défis, c'est parce qu'ils ont certains sanskars, बाहर mais के साधन ce que vous अपनाओ, devez वाणी faire से बोलो du तो mansa कुछ नहीं seva. होता है। Juste, si vous तो मनसा parlez सेवा जो है वो करने से aussi, परिवर्तन donc ça हो ne जाता है। fonctionnera pas si vous parlez, तो इसलिए mais à कहा कभी travers le कोई mansa seva, स्वभाव en servant à संस्कार travers को votre देखते esprit, cela va aider. ये Lorsque vous संकल्प voyez ना la आए nature कि de पता quelqu'un ou les नहीं sanskars de मेरा quelqu'un, परिवर्तन n'ayez pas होगा la या pensée नहीं होगा, que je ne sais चाहे pas अपने लिए si चाहे celui-ci दूसरों va के लिए। changer ou pas. ना उम्मीद को सदा के Alors, que लिए ce soit pour vous-même ou pour les उम्मीद में autres, n'ayez बदल pas दो। cette sorte de pensée. Transformez le découragement en espoir यही तो pour जीवन है ना, toujours. पुरुषार्थ, कोशिश करो, C'est करते notre रहो। vie, n'est-ce pas, de faire des efforts, de निश्चय अटूट continuer है d'essayer, तो continuer विजय भी d'essayer. Alors, सदा quand है। votre foi est inébranlable, votre victoire est constante. निश्चय में जब क्यों क्या आता है, Et quand dans votre foi, vous vous निश्चय posez la में जब question क्यों de क्या आता है, pourquoi ou quoi, तो विजय अर्थात प्राप्ति में donc भी à ce moment-là, कुछ ना कुछ कमी il बन manquera जाती है। quelque chose dans votre victoire, autrement dit, dans तो vos सदा acquisitions. उम्मीदवार, Alors, ayez toujours de सदा l'espoir. विजयी Soyez toujours बनो victorieux. और बनाओ। अपने Ayez साथ toujours साथ de दूसरों को l'espoir, भी soyez toujours victorieux et बनाते, चाहे rendez वो les autres victorieux. परिवर्तन के लिए है, चाहे वो किसी भी प्रकार के Donc, pour पुरुषार्थ vous-même et aussi pour les भी autres, quels विजयी que soient बनो les और efforts que दूसरों vous को भी faites, विजयी बनाओ। soyez victorieux और विजयी को देख toujours. करके दूसरे को प्रेरणा भी Soyez मिलती है toujours victorieux. कि Et हम भी lorsque कर vous êtes सकते हैं, victorieux, जब ये les कर सकता है autres तो मैं sont भी कर सकता inspirés हूँ। aussi. हम Ils se हिम्मती हो disent, s'ils जाएंगे peuvent तो le बहुत faire, हो je peux le जाते हैं। faire aussi. Alors, si nous sommes तो अंत découragés, घड़ी comment तक pourrions-nous aider les autres? अपनी हिम्मत को, Si vous voulez आशा aider को, les autres, vous devriez बुद्धि être दीपक को जलाए रखना, उसी का हमें victorieux, garder votre पुरुषार्थ niveau करना है। stable. ओम शांति। Ça devrait être notre effort à ce moment-ci. Om अव्यक्त Shanti. मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन La révision du और Murli स्मृति Avyak, के मोती les joyaux de connaissance et les perles d'amour. C'est un Murli du 2 mai 1974, devenir अव्यक्त complet वाणी avec toutes les तारीख है vertus. 2 मई 1974। अब बाप समान सर्वगुण Tout संपन्न comme le बनो, Père, devenir complet avec toutes les सर्व vertus comme प्राप्तियों le से Père. संपन्न बनाने वाले, अटल अखंड और निर्विघ्न Donc, celui qui विश्व nous के rend, राज्य का अधिकारी बनाने वाले, donc c'est celui qui सर्वशक्तिवान शिव donne बाबा बोले, le droit. अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो, Donc, Baba dit, vous considérez-vous जैसे comme ज्ञान les सागर maîtres océan de सर्वशक्तियों से connaissances. संपन्न है, Tout comme l'océan de ऐसे अपने को connaissances est भी complet सर्व avec प्राप्तियों tous les से pouvoirs, de la क्या même संपन्न manière, vous अनुभव करते हो। considérez-vous comme complet यह avec toutes जो les कहावत acquisitions. है कि देवताओं के Est-ce खजाने que में अप्राप्त la कोई louange, भी rien ne manque वस्तु dans le नहीं trésor होती des है, divinités? Est-elle यह chantée pour les कहावत brahmines ब्राह्मणों की गाई ou pour हुई les है divinités? या देवताओं की। सर्व Donc, संस्कार est-ce que cette ब्राह्मण chanson est pour जीवन les में brahmines ou ही pour les तुम déités? अनुभव Vous faites करते हो, l'expérience de tous les क्योंकि sanskars dans अभी votre vie तुम सर्व brahmine संस्कार parce que अपने में भर vous रहे vous हो। remplissez de tous ces तो यह sanskars. गायन के संस्कार Ainsi, अभी से vous तुम faites अनुभव l'expérience करते des हो, sanskars de cette louange en vous-même en ce क्योंकि moment. इस समय Donc, est-ce que vous ऊंच faites से cette ऊंच बाप expérience? दादा के Parce que तुम c'est en ce बच्चे हो, moment que vous êtes les enfants de लेकिन Bap-Dada, तुम le, देवताई le plus जीवन haut में de मास्टर tous. Cependant, सर्वशक्तिमान pendant नहीं votre vie de déité, कहलाएंगे, vous ne serez pas appelés les maîtres tout-puissants. जबकि
अभी सागर puisque के vous संतान êtes हो les enfants de तो l'océan. सागर समान Serez-vous complet संपन्न comme होंगे l'océan maintenant या ou dans le भविष्य में futur? होंगे ज्ञान Serez-vous सागर complet comme l'océan बाप maintenant ou dans le बच्चों futur? को Le Père सब rend में les enfants संपन्न complets अभी बनाते en हैं tout à cette तब ही époque. लास्ट Et c'est स्टेज pourquoi la का louange गायन किया जाता है du niveau final सर्वगुण संपन्न est complet avec 16 toutes les कलह vertus, संपन्न संपूर्ण निर्विकार 16 degrés célestes और complets, संपूर्ण अहिंसक complètement sans vice महिमा में et भी सबके complètement non साथ violents. संपन्न वह संपूर्ण शब्द है Et dans यह l'éloge, le mot complet est संपन्नपनता également भर attaché à सब chaque vertu. बाप Ce द्वारा n'est que इस dans la vie ब्राह्मण जीवन brahmine में ही que l'on reçoit du Père मिलता है l'héritage d'être complet. अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है Avez-vous revendiqué votre droit à l'héritage ou जब allez-vous से encore बाप le के बने revendiquer? तब से Vous devriez वर्षे avoir के un droit अधिकारी à बने l'héritage à partir du moment वर्षा क्या où है vous appartenez au Père. क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति वह Qu'est-ce सर्व que का l'héritage? अखंड Faites-vous खजाना l'expérience de toutes les अनुभव करते réalisations et les trésors illimités जब वर्षे sans के limite dans अधिकारी votre हैं héritage? तो अधिकारी की Puisque निशानी vous क्या avez droit à है l'héritage, quel est le signe de quelqu'un अधिकारी qui a tous बाप les droits? समान सदा Celui qui a tous les droits serait कल्याणकारी constamment रहत comme le Père, un महाज्ञानी bienfaiteur, गुणदानी miséricordieux, बाप का हर un grand संतान donneur, हर un donneur बोल de हर vertu, कर्म द्वारा quelqu'un qui accumule, साक्षात्कार कराने वाला qui accorde, pardon, une साक्षात vision बाप du Père à समान travers होता sa pensée, ses ऐसे paroles et ses अधिकारी actions का pratiques गायन comme है le Père. कि उसके जीवन में अप्राप्त Pour कोई ces वस्तु âmes, de नहीं telles âmes qui ont tous les अच्छा droits, la आगे के लिए louange est que बस rien इतना ne ही manque ओम शांति dans leur vie. Donc, la louange est que rien ne manque dans leur vie. Maintenant, nous allons écouter, oui, les Didi, je crois.